Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? हाँ जी, clear and audible. Okay, thank you so much, sister. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back comfortably. I withdraw my attention from the outside world and bring it to myself in the present moment. I open myself to the awareness of the divine. I connect with the divine in my own way. I am silent and still before God. I surrender myself to the divine. I let God love me. I absorb the eternal beauty of and love of God within my heart. I am worthy of this love. God knows me, God understands me, and loves me with unconditional love. God looks upon me with love only. God knows the beginning, the middle, and the end of me. I accept God's divine love, and together we become love. I am a child of love. I belong to the divine. I rest in the stillness of God's love, in peace, loving acceptance. I experience pure contentment. I release the pain of unsatisfied desires and complicated relationships. Together, combined in love with God, we radiate love. I send out heartfelt feelings of loving acceptance to my family, my friends, my colleagues. I reach out to their hearts with pure love. My heart is overflowing with love. Thank you so much. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay. So yesterday we had started with the topic transformation through the body. तो ये हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था फर्स्ट पैराग्राफ तो आज इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो सीकर कह रहे हैं why have most religions condemned or denied the body? It seems that spiritual seekers have always regarded the body as a hindrance or even as sinful. Why have so few seekers become finders? तो यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं कि on the level of the body, humans are very close to animals.
All the basic bodily functions, pleasure, pain, breathing, eating, drinking, defecating, sleeping, the drive to find a mate and procreate, and of course, birth and death we share with the animals. तो ये सारी चीजें ऑथर कह रहे हैं कि हम सब एनिमल्स के जैसे ही हैं. A long time after their fall from a state of grace and oneness into illusion, humans suddenly woke up in what seemed to be an animal body. तो ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि इनिशियली humans were complete, but क्या हुआ फिर उनका fall हुआ. And suddenly, एक दिन when they realized that they were in this animal body, जब उन्होंने अपने बॉडी को देखा, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो what happened, they found this very disturbing. तो इनिशियली जो ह्यूमंस थे वो सोल कॉन्शियस थे, बट गिरते गिरते जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो वो अपने आप को देख के बहुत डिस्टर्ब हो गए. डोंट फूल योरसेल्फ, यू आर नो मोर देन एन एनिमल. This seemed to be the truth that was staring them in the face, but it was too disturbing a truth to tolerate. Adam and Eve saw that they were naked and they became afraid. Unconscious denial of their animal nature set in very quickly. The threat that they might be taken over by powerful instinctual drives and revert back to complete unconsciousness was indeed a very real one. Shame and taboos appeared around certain parts of the body and bodily functions, especially sexuality. तो क्या हुआ जब उन्होंने अपनी बॉडी को देखा, एकदम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, और वो तभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी उनको कि व्हाट इज दिस बॉडी. तो डाउनफॉल हुआ. So the light of their consciousness was not yet strong enough to make friends with their animal nature. तो जो सोल कॉन्शियसनेस थी, जो प्योरिटी थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी. तो फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए. To allow it to be and even enjoy that aspect of themselves, let alone to go deeply into it to find the divine hidden within it, the reality within the illusion. तो तभी इतनी सोल पावर स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपनी रियलिटी को समझ पाए. ये जो इल्यूजन है, बॉडी की जो इल्यूजन थी, उससे वो निकल पाए. तो तभी उनमें इतनी पावर नहीं थी, सोल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी. So they went into that illusion. So they did what they had to do. They began to disassociate from their body. They now saw themselves as having a body rather than just being it. When religions arose, this disassociation became even more pronounced as the you are not your body belief. Countless people in East and West throughout the ages have tried to find God, salvation, or enlightenment through denial of the body. तो फिर क्या हुआ जब रिलीजन्स आए तो ये बिलीफ बहुत प्रोमिनेंट हो गई कि आई एम नॉट दिस बॉडी. तो लोग कैसे ये एनलाइटमेंट ढूंढने लगे बाय बाय डिनाइंग देयर बॉडी, अपनी अपनी बॉडी को डिनाई करने से. This took the form of denial of sense pleasures and of sexuality in particular, fasting, and other aesthetic practices. They even inflicted pain on the body in an attempt to weaken or punish it because they regarded it as sinful. तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो उनको लगा ये बहुत गलत हो गया है, तो अपने आप को ही पेन कॉज करने लगे. बिकॉज वो इस ये जो लाइन थी, यू आर नॉट योर बॉडी, को वो समझ नहीं पाए कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल. बट इंस्टेड वो बॉडी को ही हार्म करने लग गए. इन क्रिश्चियनिटी दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड mortification of the flesh. Others tried to escape from the body by entering trance states or seeking out of the body experiences. Many still do. तो ये फिर क्या होने लगा, वो
ऐसे ट्रांस लाइक अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगे कि बॉडी के बाहर दे स्टार्टेड गोइंग इनटू ट्रांस, अपने इमेजिनरी सेल्फ को विजुलाइज करने लग गए. Many still do. Even the Buddha is said to have practiced body denial through fasting and extreme forms of asceticism for 6 years. But he did not attain enlightenment until after he had given up this practice. तो वो फास्टिंग करने से अपने आप को अपनी बॉडी को डिनाई करने से ऑथर कह रहे कि इवन बुद्धा डिड दैट, बट उनको एनलाइटमेंट उन सब चीजों से नहीं मिली. The fact is that no one has ever become enlightened through denying or fighting the body or through an out of the body experience. Although such an experience can be fascinating and give you a glimpse of the state of liberation from the material form, in the end, you will always have to return to the body where the essential work of transformation takes place. तो ऑथर यही समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को डिनाई करें या हमें कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस हो, हम कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाएं जहाँ पे हमें बहुत एक ब्लिसफुल फील हो रहा हो, बट इवेंचुअली रियलिटी क्या है, हमें वापस इस बॉडी में ही आना है. तो ऑथर कह रहे हैं the transformation has to take place within the body, the realization awareness हमें बॉडी में रहकर ही आएगी. Transformation is through the body, not away from it. Underline. This is why no true master has ever advocated fighting or leaving the body, although their mind-based followers often have. तो जो ट्रूली स्पिरिचुअल होंगे, जो ट्रूली स्पिरिचुअल टीचर या मास्टर होंगे, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको फास्ट करना है या ये बॉडी को हार्म करना है. नहीं, दैट इज नॉट द वे. बॉडी में रह के ही हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लानी है, अपने खुद के सोल पावर को एक्सपीरियंस करना है. Of the ancient teachings concerning the body, only certain fragments survive, such as Jesus' statement that your whole body will be filled with light, or they survive as myths, such as the belief that Jesus never relinquished his body but remained one with it and ascended into heaven with it. तो जैसे ऑथर कह रहे हैं जीसस ने कहा योर होल बॉडी विल बी फिल्ड विथ लाइट. Almost no one to this day has understood those fragments or the hidden meaning of certain myths, and the you are not your body belief has prevailed universally, leading to body denial and attempts to escape from the body. Countless seekers have thus been prevented from attaining spiritual realization for themselves and becoming finders. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस मिथ में ही हैं, यू आर नॉट योर बॉडी बिलीफ में. तो वो क्या करते हैं, बाय फास्टिंग, बाय डिनायल ऑफ द बॉडी, बाय हार्मिंग देमसेल्व्स, दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी. तो तभी उनको वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज रियलिटी क्या है, बॉडी में रहकर ही, बॉडी के अंदर ही हमने वो इनर पीस के साथ कनेक्ट करना है. वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स बीइंग इन द बॉडी, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट. Is it possible to recover the lost teachings on the significance of the body or to reconstruct them from the existing fragments? तो यहाँ पे जो सीकर है वो पूछ रहे हैं कि मतलब पॉसिबल है कि हम जो जो टीचिंग्स है उससे दोबारा एक बार समझ पाए कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. देयर इज नो नीड फॉर दैट. All spiritual teachings originate from the same source. In that sense, there is and always has been only one master who manifests in many different forms.
तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात समझा रहे हैं ऑथर कि ऑल द टीचिंग्स, जो सारे रिलीजन्स में जो टीचिंग्स हैं, वो एक ही सोर्स से आती हैं, दैट इज फ्रॉम द वन सुप्रीम सोल, जहाँ से ये सारी टीचिंग्स ओरिजिनेट होती है। और वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में अपने अपने तरीके से समझाते हैं। आई एम द मास्टर एंड सो आर यू, once you are able to access the source within, and the way to it is through the inner body. Although all spiritual teachings originate from the same source, once they become verbalized and written down, they are obviously no more than collection of words. And a word is nothing but a signpost, as we talked about earlier. All such teachings are signposts pointing the way back to the source. तो ऑथर यही कह रहे हैं कि जो हमारे सुप्रीम सोल है, द डिवाइन, जो हमें वो सिखाते हैं, दैट इज दैट आई एम द मास्टर, आई एम द सोल, आई एम फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ लव, एंड टू एक्सपीरियंस दैट आई हैव टू गो विद इन, I have to, I go through the inner body. तो जो सारी spiritual teachings भी है ऑथर कह रहे हैं, वो सेम सोर्स से आ रही है, इट इज फ्रॉम द सुप्रीम सोल। बट जब वंस वो वर्बली जब हम बोलते हैं, जो जैसे कहते हैं ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो वर्ड्स हैं उनको दे आर नॉट ऑलवेज कम्युनिकेटेड इन द सेम वे, बिकॉज अलग अलग लोग उनको अलग इंटरप्रेट करते हैं। बट जो मेन जो टीचिंग है वो सुप्रीम सोल से एक ही है, दैट इज द सेम फॉर एवरीवन। I have already spoken of the truth that is hidden within your body, but I will summarize for you again the lost teachings of the masters. So here is another signpost. Please endeavor to feel your inner body as you read or listen. So it's very important to feel and experience it rather than just getting lost in the words. Okay, sermon on the body. What you perceive as a dense physical structure called the body, which is subject to disease, old age, and death, is not ultimately real, is not you. It is a misperception of your essential reality that is beyond birth and death and is due to the limitations of your mind, which, having lost touch with being, creates the body as evidence of its illusory belief in separation and to justify its state of fear. तो यहाँ पे ऑथर बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि जब जो हम ये परसीव करते हैं, ये बॉडी, ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, और जिस जो लाइफ एंड डेथ में आती है, इट इज नॉट रियल, ये रियलिटी नहीं है। द बीइंग, द सोल, दैट इज व्हाट इज रियल, दैट इज एवर प्योर, दैट इज इमॉर्टल, जो ये लाइफ एंड डेथ के चक्रों में नहीं आती, दैट इज व्हाट इज रियल। But do not turn away from the body, for within that symbol of impermanence, limitation, and death that you perceive as the illusory creation of your mind is concealed the splendor of your essential and immortal reality. तो यहाँ पे ऑथर ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने इस बॉडी पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस बॉडी को पेन पहुंचानी है, या ये फास्टिंग वगैरह करके इस बॉडी के डिनायल में आना है, नहीं। बिकॉज जो सोल एक्सपीरियंस होता है, द बीइंग दैट वी एक्सपीरियंस, दैट इज थ्रू द बॉडी, यू नो हम उसको विदाउट बॉडी तो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। द सोल हैज टू कम इनटू अ बॉडी for us to experience, for us to speak. So it is very important that we understand that we can't turn away from the body. Do not turn your attention elsewhere in your search for the truth, for it is nowhere else to be found but within your body. तो कहीं और हमें सच को नहीं ढूंढना। द ट्रुथ इज विद इन अस, एंड ट्रुथ यही है
कि I am a soul who and I am constantly connected to the Supreme Soul. Do not fight against the body, for in doing so, you are fighting against your own reality. You are your body. The body that you can see and touch is only a thin illusory veil. Underneath it lies the invincible inner body, the doorway into being, into life unmanifested. ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर बहुत क्लियर यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमें अपने बॉडी से नहीं लड़ना है वी आर आवर बॉडी बट जो ये फिजिकल बॉडी जो दिखती है दैट इज जस्ट अ कवरिंग जैसे कहते हैं व्हाट द रियलिटी इज अंडरनीथ इट जो बीइंग है जो सोल है दैट रिजाइड्स इन द बॉडी दैट इज व्हाट द रियलिटी इज बट हम उसको एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं जब हम इस बॉडी में हैं तभी हम वो सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू द इनर बॉडी यू आर inseparably connected to this unmanifested one life birthless deathless eternally present through the inner body you are forever one with God so profound underline through the inner body you are forever one with God तो हमें भगवान को कहीं बाहर नहीं ढूंढना He is constantly with us 24 by 7. हमें बस अपने अंदर झांकना है अपनी इनर सोल कॉन्शियसनेस को फील करना है अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना है by disidentifying from our mind then we can connect to God. Have deep roots within. The key is to be in a state of permanent connectedness with your inner body to feel it at all times. तो धीरे धीरे हमने अपनी प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि हम permanently connected हो with the divine, with God. We are permanently connected to the supreme soul. एंड वो कैसे होगा जितना ज्यादा हम सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हम अपने माइंड से डिसआइडेंटिफाई करेंगे slowly slowly our soul powers will start increasing. This will rapidly deepen and transform your life. The more consciousness you direct into the inner body, the higher its vibrational frequency becomes, much like a light that grows brighter as you turn up the dimmer switch and so increase the flow of electricity. तो जितना ज्यादा हम अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी जो इनर लाइट है वो बाहर भी ग्लो करेगी. At its higher energy level, negativity cannot affect you anymore, and you tend to attract new circumstances that reflect this higher frequency. तो जब हम इस हायर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे सोल कॉन्शियस रहेंगे तो हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे विल बी कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू गॉड कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड कोई भी फिर नेगेटिविटी जो हो रही है हमें अफेक्ट नहीं करेगी. If you keep your attention in the body as much as possible, you will be anchored in the now. If you keep your attention in the body as much as possible, you will be anchored in the now. मतलब जितना ज्यादा हम अपनी inner body पे ध्यान देंगे, we'll be in the present. जितना ज्यादा हम mind के past, future से detached रहेंगे, उतना ज्यादा हम present रहेंगे. You won't lose yourself in the external world, and you won't lose yourself in your mind. Thoughts and emotions, fears and desires may still be there to some extent, but they won't take you over. तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना जैसे एवरी आवर हम 1 मिनट निकालें जब हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें अपनी इनर बॉडी पे ध्यान रखे ध्यान दे साइलेंस में बैठे कनेक्ट करें टू द डिवाइन टू गॉड. तो जितना ज्यादा हम ये प्रैक्टिस करेंगे हम अपने माइंड के थॉट्स इमोशन से अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे. वो थॉट्स
आएंगे, दे विल स्टिल बी देयर, बट वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. Please examine where your attention is at this moment. Are you listening to me, or are you reading these words in a book? This is the focus of your attention. You are also peripherally aware of your surroundings, other people, and so on. Furthermore, there may be some mind activity around what you are hearing or reading, some mental commentary. Yet, there is no need for any of this to absorb all your attention. See if you can be in touch with your inner body at the same time. Keep some of your attention within. Don't let it all flow out. अब ऑथर ये एग्जाम्पल दे रहे कि अब इस वक्त हम अपने आप पे अटेंशन, अपने आप को देखें कि हमारा अटेंशन इस वक्त कहाँ है. यू नो क्या हम हमारा अटेंशन completely है on on these, on what the author is trying to explain to us. थोड़ा बहुत हमारा ध्यान बाहर भी है, बट हमें अटेंशन खुद पे देनी है. और जब कुछ भी बाहर भी चल रहा हो, हमें एक ये प्रैक्टिस रखनी है कि अ लिटिल अटेंशन वी कीप गिविंग टू आवर इनर सेल्फ. हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपने अंदर ध्यान रखें. अपने अंदर नोटिस करें कि क्या चल रहा है, व्हाट आर माय थॉट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी. Don't let it all flow out. Feel your whole body from within as a single field of energy. It is almost as if you were listening or reading with your whole body. Let this be your practice in the days and weeks to come. तो ये हमें एक अपनी प्रैक्टिस बनानी है कॉन्स्टेंटली. कुछ भी करते समय हमें अपना ध्यान अंदर की तरफ भी रखना है. बस पूरा, जैसे ऑथर ने कहा ना, वी डोंट नीड टू फ्लो आउट completely. We have to pay attention to ourself as well, to our inner self as well. Do not give all your attention away to the mind and the external world. By all means, focus on what you're doing, but feel the inner body at the same time whenever possible. Stay rooted within. Then observe how this changes your state of consciousness and the quality of what you are doing. ये ना एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जो हमें करनी है, एवरी सिंगल डे. इट्स नॉट जस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट एक एक ये हैबिट बनानी है कि हम हर थोड़ी देर बाद अपने आप को ऑब्जर्व करें. ये प्रैक्टिस बनाएं हम. Whenever you are waiting, wherever it may be, use that time to feel the inner body. In this way, traffic jams and lineups become very enjoyable. Instead of mentally projecting yourself away from the now, go more deeply into the now by going more deeply into the body. थोड़ा थोड़ा भी हमें बीच में टाइम मिले, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक जैम में है, या कहीं लाइन में किसी किसी के लिए वेट कर रहे हैं, वो टाइम हम अपने आप के लिए रखें. वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ, ऑब्जर्विंग आवर इनर बॉडी. ये सब करने से we'll be able to come in the present. तो ये हमें अपने आप के साथ ये प्रैक्टिस बढ़ानी है. The art of inner body awareness will develop into a completely new way of living, a state of permanent connectedness with being, and will add a depth to your life that you have never known before. जितना ज्यादा इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, तो उतनी ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस की फीलिंग डेवलप होएगी. हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम अवेयर हो जाएंगे अपने थॉट से, अपने माइंड पैटर्न से. तो इट विल बिकम लाइक अ न्यू वे ऑफ लिविंग completely. एंड दैट इज व्हाट इज enlightenment. फिर that is where we have to reach to, slowly and steadily, by paying attention on ourselves each and every day.
It is easy to stay present as the observer of your mind when you are deeply rooted within your body. No matter what happens on the outside, nothing can shake you anymore. Unless you stay present, and inhabiting your body is always an essential aspect of it, you will continue to be run by your mind. जब तक हम प्रेजेंट में नहीं आते, जब तक हम कॉन्शियसली अपने आप पे ध्यान नहीं देते, माइंड हमें रूल करते रहेगा, हम माइंड आइडेंटिफाइड ही रहेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। कोई भी थोड़ा थोड़ा टाइम हमें मिले बीच बीच में अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, साइलेंस में बैठे। The script in your head that you learned a long time ago, the conditioning of your mind will dictate your thinking and your behavior. तो जो स्क्रिप्ट हमारे माइंड में है, जो कितने जन्मों से चलती आ रही है, जो एक माइंड कंडीशन हुआ है, वो ओवर पावर करने की बहुत कोशिश करेगा। बट हमें उसके उसको ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना। हमें अपनी अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि वी हैव गॉट दिस नॉलेज नाउ, वी हैव अंडरस्टूड, बट वी नीड टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट एंड स्टार्ट डिटैचिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर माइंड, जिसकी एक वो पैटर्न हुआ पड़ा है, जिसकी प्रोग्रामिंग चलती जा रही है, कॉन्स्टेंटली। You may be free of it for brief intervals, but rarely for long. This is especially true when something goes wrong or there is some loss or upset. Your conditioned reaction will then be involuntary, automatic, and predictable, fueled by the one basic emotion that underlies the mind identified state of consciousness: fear. तो वही ये क्या होगा, इनिशियली तो हम प्रेजेंट रहेंगे ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर थोड़े थोड़े इंटरवल्स के लिए ही हम वो प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जब जब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ होता है, तो कई बार ऐसे फील किया है कि अपने आप फिर रिएक्शन निकल जाता है, बिकॉज वो माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा डीप है कि वो इतनी इजीली उससे बाहर नहीं निकलती। तो वही ऑथर समझा रहे हैं कि जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं बढ़ाएंगे, हम वो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस निकलते रहेंगे। So when such challenges come, as they always do, make it a habit to go within at once and focus as much as you can on the inner energy field of your body. ऐसा कुछ भी चैलेंज हमारे साथ आए तो हम इमीडिएटली जो हम रिएक्ट कर जाते हैं ना, वो करने के बजाय हम थोड़ा सा पॉज करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, ऑब्जर्व करें माइंड में क्या चल रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग। This need not take long, just a few seconds, but you need to do it the moment that the challenge presents itself. Any delay will allow a conditioned mental emotional reaction to arise and take you over. तो जब भी हमारे साथ कोई भी चैलेंज आए, इमीडिएटली हमने अवेयर होना है, हमें कॉन्शियस होना है, माइंड के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और फिर रिस्पॉन्ड करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम पॉज नहीं करेंगे, फिर एकदम से रिएक्शन निकल जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी कोई चैलेंज आता है, दैट इज द एक्चुअल टेस्ट फॉर अस। When you focus within and feel the inner body, you immediately become still and present as you are withdrawing from the consciousness from the mind. A response is required in that situation. It will come up from this deeper level. Just as the sun is infinitely brighter than a candle flame, there is infinitely more intelligence in being than in your mind. हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को याद रखना कि जब भी कोई सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, हमने पॉज करना है,
रिफ्लेक्ट करना है इनर सेल्फ पे। और फिर जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, इट विल बी फ्रॉम अ डीपर लेवल बिकॉज इट विल बी फ्रॉम अ सोल कॉन्शियस लेवल। अदरवाइज क्या होता है, कुछ भी सिचुएशन आती है, हम बिल्कुल एकदम इन अ सेकेंड हम माइंड के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें बढ़ानी है नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चैलेंज आए, खुद को ऑब्जर्व करना है, पॉज करना है, और फिर एक 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 डिटैच होके हमें रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन से, अपने आप से अवेयर होके, from soul consciousness, not from mind consciousness. As long as you are in conscious contact with your inner body, you are like a tree that is deeply rooted in the earth, or a building within with a deep and solid foundation. The latter analogy is used by Jesus in the generally misunderstood parable of the two men who build a house. One man builds it on the sand without a foundation, and when the storms and floods come, the house is swept away. यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दो दो आदमी होते हैं, एक जो सुपरफिशियली सैंड पे घर बनाते हैं, तो वो स्टॉर्म्स फ्लड से इट गेट्स स्वेप्ट अवे. द अदर मैन digs deep until he reaches the rock, then builds his house, which is not swept away by the floods. तो इससे हम क्या सीखते हैं कि we have to work on our foundation. We have to work within ourselves, on our soul power, on increasing our soul power. So we'll read till here. कल फिर हम यहाँ से start करेंगे. Okay, so I'll just share the questions with you today. Okay, so the first question is, okay. The author has explained in detail the way in which we can practice connecting with our inner body. Has this helped you understand how you can direct your attention inwards? Have you ever experienced this before? And how has your experience been? So the second question is, what have you understood from what the author has suggested about transformation through the body? Do you think you can stay in constant awareness of the truth that is hidden within your body? तो ये आज के दो क्वेश्चंस हैं. तो आप कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं, या यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. आप उस पे भी रिप्लाई कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग today's session. We'll see you all tomorrow again. Thank you.